Namaskar friends, welcome to Headlines of the Day. In this video, we will discuss major headlines of the Hindu. Before we start, I would say it's not the load that breaks you down, it is the way you carry it. तो चलिए फिर इसी के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. Our first important headline is G20 summit to focus on food energy security. It is available on page number 1. और ये related है paper 2 international grouping से. In this article, we have to know focused areas of upcoming G20 summit and we have to know about G20. तो friends, फोकस्ड एरियाज कौन से होंगे? फूड, एनर्जी सिक्योरिटी एंड पोस्ट कोविड-19 हेल्थ इश्यूज, राइट. अगर हम G20 की बात करें तो इट इज द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन रिप्रेजेंटिंग अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज POSCO Act not meant to criminalize consensual relationships, observes High Court. It is available on page number 2 और ये related है paper 2 Polity and Governance से. In this article, we have to know about Protection of Children from Sexual Offences Act and recent observations of court in this context. So friends, recently Delhi High Court said that intention of POSCO Act was to protect the children from sexual abuse, not to criminalize consensual romantic relationship of young adults. बाकी पोस्को एक्ट को हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. Our next important headline is Behind the Smoke Screen Around Private Climate Finance. It is available on page number 6 और ये related है पेपर 3 Environment section से. In this article, we have to know about climate finance, critical component of climate finance, significance, issues, recent developments and what lies ahead. तो friends, क्लाइमेट फाइनेंस को हमारी वेबसाइट पर रिसेंटली बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. उसके अलावा आप इस आर्टिकल को भी गो थ्रू कर सकते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है. अगर हम ओवरव्यू देखें तो क्लाइमेट फाइनेंस रेफर्स टू लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग विच मे बी ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक, private and alternative sources of financing, and it is critical to addressing climate change because large scale investments are required to significantly reduce emissions. Our next important headline is Beware the tempting apple of Ukraine mediation. It is available on page number 6 और ये related है paper 2 international relations से. In this article, we have to know about the recent developments linked to Russia-Ukraine conflict, India's mediation efforts, associated concerns and way ahead. तो दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. इसके अलावा रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को हमारी वेबसाइट पे भी कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है, तो आप वहां से भी कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं. Our next important headline is New regulations for awarding PhDs. It is available on page number 8 और ये related है paper 2 education section से. In this article, we have to know about University Grant Commission's Regulations 2022, what led to the need to introduce new rules and how have the latest regulations been received. दोस्तों, new regulations have waived the need to mandatorily publish a research paper in a peer-reviewed journal, and this is accompanied by completely abolishing MPhil, which has been a gateway for PhD programs. बाकी अदर पॉइंट्स के लिए आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हैं. Our next important headline is Why has France ended its military operations in Sahel? It is available on page number 8 और ये related है paper 3 defense section से. In this article, we have to know about Operation Barkhane. दोस्तों, recently France announced the end of decade-long Operation Barkhane in Africa. अगर हम इसकी objectives देखें दोस्तों, तो it has mainly two objectives. कौन से? To liberate Mali from insurgency in the north. Second is to see through counter-terrorism operations in West Africa, including neutralization of key terrorists. Our next important headline is Are data localization requirements necessary and proportionate? It is available on page number 9 और ये related है paper 3 IT and computer से. In this article, we have to know about data localization, its needs, issues around the data localization and way ahead. तो दोस्तों, डाटा लोकलाइजेशन को हमारी वेबसाइट पे कई बार कवर किया जा चुका है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. उसके अलावा आप यहां से भी कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं. अगर हम ओवरव्यू देखें तो डाटा लोकलाइजेशन इज द एक्ट ऑफ स्टोरिंग डाटा ऑन एनी डिवाइस फिजिकली प्रेजेंट विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री. इट सिंपली मीन्स restricting the flow of data from one country to another. Our next and last important headline is Extra-regional fishing fleets present in Indian Ocean Navy. It is available on page number 12 और ये related है paper 3 economy section से. In this article, we have to know about illegal, unreported and unregulated fishing
दोस्तों, it is a broad term that captures a wide variety of fishing activity and it depletes fishing stocks, destroys marine habitats, puts fishermen at disadvantage and impacts coastal communities, especially in developing countries. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.